we have Mr. Arjun Singh from Trillionaire Clothing on the podcast today. Trillionaire जो आपने नाम रखा है, it's very catchy. उसके पीछे क्या thought है? Trillionaire is basically, for me, is like abundance. Like you can be a trillionaire of hearts, of good thoughts, of health, definitely of wealth. बहुत सारे streetwear brands खुलते हैं, बंद हो जाते हैं. What are some of the common mistakes that you think people make? जो education होती है, I think that is important. You always have to have that knowledge before you put it in. You know, tasteless chefs make tasteless food. And when a brand like yours, they go for Milan Fashion Week, New York Fashion Week, how much of that is for increasing sales and how much of that is for increasing brand equity and recall? For some brands, it's a marketing gimmick, while for some, it's actually showcasing their talent. What gap are you trying to fill with that brand identity जो इंडिया में missing है या globally missing है? या तो 5,000 रुपए की टी शर्ट है या तो 50,000 की है, तो वो गैप आई वांट टू फिल. Why isn't an Indian brand being able to go global? They pull you down. Hello and welcome to my very own podcast, the Adhiraj Sethi Circle. My name is Adhiraj Sethi and today's guest, well, if you like streetwear, you'll probably be buying his clothes more often than not in the coming years. Yes, we have Mr. Arjun Singh from Trillionaire Clothing on the podcast today. Hello, welcome to the podcast. Thank you, Adi. Thank you for having Welcome me to the here. circle, sir. How are you doing? God has Comfortable? been great. कुछ चाहिए, कुछ पानी वानी मंगा दे. एकदम ठीक है sir. All Thank good. you so much. Let's just start with your journey, sir. I like to opinionate your perspective as a global citizen because you have been in Milan, in Dubai. Let's start with your journey. Tell us, walk us through from the beginning. How did you start and how did you end up with Trillionaire Clothing now? Well, I call myself a global citizen because I was born in Calcutta, in West Bengal. Yeah. I actually grew up in Mumbai for the first 2 years and then I moved to the US, where then I came back Delhi, then I came Bombay, then Milan, then Toronto, ending up in Wow. Dubai. Wow. So yeah, I've traveled almost every decade. I've had a new city, a new country I'm staying in. And that's my story of being a global If I'm not mistaken, you started your journey as an interior designer first. Yes. And then you pivoted into the fashion industry. थोड़ा उसके बारे में बताओ. Well, when I was growing up, my family was into a little construction mode and everything. घर बन रहे थे उस टाइम पे नए you know, shifting ये. हाँ जी. तो यार मुझे हमेशा से ना आर्किटेक्ट बनने का मन था. So I went to Dehradun for a year to study architecture, but कुछ failures होते हैं life में. I didn't cope up. I came back Delhi, Amity Noida, joined किया as an interior designer. Okay. I started my bachelor's in interiors from Amity. I went to Milan in 2016 to Domus Academy, where I started my journey for my master's in design. और वहाँ जाके मुझे कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई कि design is not just interiors and interiors is not just design. Fair. You study a personality, a soul of a place, but you can also study a personality of a soul of a human being. Yeah. Since I was working interning with a designer named Paolo Ghiacci as a mentor for a project, I realized कि यार fashion is my calling. Okay. और कोविड हुआ, वापस आया, कोविड हुआ, तो मुझे लगा यार एक गैप है. मैंने एक गैप ढूंढा because I stay in Dubai, we stay in Middle East. There was this gap of bold, cultured, modest clothing, streetwear clothing. आजकल आप देखो ना streetwear सारे erotic जा रहे हैं. I don't want to name the brands, but उनके designs थोड़े erotic है या उनके fits थोड़े erotic है. मैं वो चाहता नहीं था. So I decided to create Trillionaire, a modest, bold, minimal streetwear brand. You call it formally streetwear. उसके behind क्या thought Formally है? streetwear is basically our collection launch which we did at Milan Fashion Week. Okay. God been great with us. This is the second fashion week we did in 2025. That's Milan. Yeah. First was New York Fashion Week. That's amazing actually. Like we want to talk about that as well. उसके पीछे क्या working लगी to get an Indian brand, or I mean it's Dubai based but originated from you, so it's an Indian brand for me. Getting that brand to the Times Square billboards, New York Fashion Week, Milan, it's a big deal.
यार आई डोंट नो, आई थिंक गॉड हैज बीन ग्रेट ऑन अस ऑन दिस थिंग। आई डोंट नो, मुझे मुझे ऐसा लगता है भाई मैनिफेस्टेशन सपने सच होते हैं। ओके मैंने कभी एक्चुअली मैं नहीं सोचा था कि यार हम कोई फैशन वीक करेंगे इतनी जल्दी। डेफिनेटली कर ब्रांड लॉन्च किया तो यार एक हर ब्रांड ओनर का, हर क्रिएटिव डायरेक्टर का एक सपना होता है कि यार मुझे फैशन वीक करना है। हाँ पता नहीं यार कैसे, यू नो, द स्टार्स, द डॉट्स कीप्ड ऑन कनेक्टिंग एंड वी एंडेड अप न्यूयॉर्क फैशन वीक थ्रू सम सोर्सेज। ओके अब मैंने यार एक कॉन्सेप्ट उस टाइम पे सोच रहा था, जिससे हमने कॉन्सेप्ट सोचा ट्रिलियनेयर ट्रैश। अब मैं से लोग पूछते हैं यार तू लग्जरी फैशन बेच रहा है और तूने अपने कलेक्शन का नाम, वो भी अपने पहले शोकेस का नाम ट्रिलियनेयर ट्रैश क्यों रखा? हाँ तो मैंने कहा ट्रैश इज नॉट नियर जस्ट गार्बेज, ट्रैश इज व्हाट यू हैव इन योर हेड। स्लैंग में कहते हैं ना यार, यू हैव ट्रैश इन योर हेड। तो मैंने ट्रैश को कनेक्ट किया है विद द नेगेटिव थॉट्स, विद द नेगेटिविटी एंड दोज थिंग्स व्हिच वी शुडंट टॉक अबाउट, व्हिच हैपन इन द सोसाइटी। तो मैंने उस कलेक्शन का नाम ट्रिलियनेयर ट्रैश रखा है। एंड एक्चुअली हमने गार्बेज बैग से एक फैब्रिक जनरेट किया थ्रू सम सोर्सेज इन चाइना, एंड देन वी क्रिएटेड जैकेट, ड्रेसेस, गाउन्स यूजिंग दैट। वाओ। इससे पहले मेरे को ट्रिलियनेयर जो आपने नाम रखा है, इट्स वेरी कैची, उसके पीछे क्या थॉट है? वेल ट्रिलियनेयर, इफ यू सी, पीपल फर्स्ट यू नो मिस्टेक अस कि हम ऐसे ब्रांड है जो सिर्फ पैसों की बातें करते हैं। भाई हम पहली बात तो पैसों की बातें नहीं करते। ओके बीइंग अ ट्रिलियनेयर डजंट जस्ट मीन दैट यू आर ट्रिलियनेयर विद वेल्थ ऑफ मनी। ट्रिलियनेयर इज बेसिकली फॉर मी इज लाइक अबंडेंस। You know, like you can be a trillionaire of hearts, of good thoughts, of health, definitely of wealth. I want everybody to become a trillionaire wearing my brand, but या trillionaire is not just money. It's everything except money. ओके So, या so दैट्स अ I डीप always थॉट। wanted to have a name like that, like trillionaire, because मेरी जो इंस्पिरेशन है ना, वो एक ब्रांड है सुप्रीम, न्यूयॉर्क बेस्ड, या skateboard इंस्पायर्ड लोगों के लिए एक ब्रांड है सुप्रीम, which Very recently popular. acquired by LVMH. या तो व्हेन यू हियर सुप्रीम ना, वो जो नाम सुनते, जब वर्ड सुनते हो, इट सेज दैट यू आर ऑलरेडी देयर, दे हैव मेड इट। या सेम आई वांटेड ट्रिलियनेयर। जब आप सुनते हो ना ही इज अ ट्रिलियनेयर, यार इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये आई एम ऑलरेडी देयर, या दैट परसेप्शन इज आई एम हियर, आई एम नॉट कमिंग, आई एम ऑलरेडी देयर। सो आई वांटेड टू क्रिएट दैट perception in people's mind about the brand. या थोड़े ट्रिलियनेयर नाम के, थोड़े अमीर लोग अमीर नाम पहने तो अच्छा लगेगा ना। 100%। या बहुत सारे स्ट्रीटवेयर ब्रांड्स खुलते हैं, बंद हो जाते हैं। What are some of the common mistakes that you think people make, and what sets Trillionaire apart from all of these other streetwear brands? इंडिया में let's talk about the Indian streetwear market. कुछ ब्रांड्स को देखकर जिन्होंने शायद आई कॉल देम द फ्रेंड्स ऑफ द इंडस्ट्रीज, दीज पीपल हैव क्रिएटेड सच अ ब्यूटिफुल मूवमेंट around the whole country, not just the whole country, globally. Yeah. Brands like Indian brands like Blue Orange, Jaywalking, almost God. You know, भाई जब कोई, मतलब मैं दुबई रहता हूँ and I see somebody wearing a J के कपड़े या Blue Orange, I feel so proud यार, Indian brand man, Yeah, it's same. there. Yeah. So these guys created a whole revolution, a whole movement that streetwear can become successful in India. Yeah. Especially जो sneakers, Yeezy के launch, This culture. पांडा के launch, culture, जैसे जब ये streetwear culture जब develop हुआ ना, इनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि यार सही है, कुछ ऐसा करना चाहिए। अब डेफिनेटली और लोगों को मिली। The problem what these small brands actually face is they are not consistent. Okay. The other thing is they do not do their research. You know, the day you start replicating something or somebody or a brand, you fail that same day. 100%. You have to have a story. Unique positioning as देखो well. भाई, मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ आपको। मुझे किसी यूनिवर्सिटी ने बुलाया एक मास्टर क्लास लेने के लिए डिज़ाइन स्टूडेंट्स के लिए, ब्रांडिंग के बारे में। अब जब मैं गया स्टेज पे, मैंने कहा मुझे इंट्रोड्यूस मत करना, मैं अपनी इंट्रोडक्शन खुद दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि आप उल्टा पुल्टा बोल दो। मेरा नाम थोड़ा अजीब है, अर्जुन सिंह, तो आप बोल मत देना। क्यों अजीब क्यों है? अरे मतलब जस्ट लाइक दैट, आई सेड प्लीज डोंट इंट्रोड्यूस मी, आई विल गिव माय इंट्रोडक्शन। Okay. मैं स्टेज पे गया, मैंने प्रेजेंटेशन खोली, मैं पढ़ने लग गया। ब्रांडिंग इज दिस, ब्रांडिंग इज दैट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग। 5 मिनट के बाद ना मुझे रियलाइज हुआ कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैंने कहा वेट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। I jumped to the slide where I introduced myself.
and I told them my whole story. Yeah. How an interior designer turned into a fashion designer, Yeah. worked at New York Fashion Week. Yeah. उस टाइम पे मैं मिलान गया नहीं था, हम तब की बात करें, मिलान से पहले की बात है. सो वो जर्नी जब मैंने बताई, अपनी इंस्पिरेशन बताई, दे स्टार्टेड रिएक्टिंग टू मी. उसके बाद के जो 2 घंटे मैंने मास्टर क्लास लिए ना, वो बहुत मज़ेदार था. आज हम पॉडकास्ट भी इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग द पर्सन बिहाइंड द ब्रांड रादर देन व्हाट द ब्रांड इज ट्राइंग टू डू. So this is the thing that grabs everything. Yeah. The story. Yeah. Indian brands, not just Indian brands, any brand, streetwear हो, lingerie हो, sneaker हो, जूते, चप्पल, सॉक, कुछ भी बेच रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपकी स्टोरी है ना, तो पक्का बिकेगा. अगर आदि की स्टोरी है तो आदि भी बिक रहा है. ट्रू, 100%. एक ब्रांड जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, पीपल डोंट अंडरस्टैंड बट इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स योर आइडेंटिटी. आई बाय अ सर्टन ब्रांड बिकॉज आई कनेक्ट टू दैट ब्रांड. वेल उस वे में आपको कभी ऐसा लगा है जब व्हेन यू वर बिल्डिंग ट्रिलियनेयर एज अ ब्रांड, your interior designing and that design sense, that creativity helped you make something that was unique in a way? Well, Adi, I would say definitely it did. यार जो प्रोफेशनल जो एजुकेशन होती है, आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट. यू ऑलवेज हैव टू हैव दैट नॉलेज बिफोर यू पुट इट इन. टेस्टलेस शेफ्स मेक टेस्टलेस फूड. इफ यू डोंट हैव टेस्ट, यू कांट हैव गुड फूड. अब ये रियलाइज करना, आज तक जितने भी एक्टर्स हैं उनका टेस्ट है. अगर मैं उनको बोलूँ ना कि आप अपना ब्रांड लॉन्च करो, तो वो एक बेसिक ब्लैक एंड वाइट नहीं लॉन्च करेंगे. दे विल मेक श्योर इट्स सक्सेसफुल एंड इट्स कलरफुल. सो यू हैव टू हैव अ टेस्ट बिफोर यू मेक श्योर दैट द अदर पीपल टेस्ट योर फूड. ट्रू. आप कल्चर की बात भी आपने बहुत बारी करी हुई है इन योर इंटरव्यूज एंड योर आर्टिकल्स. How do you integrate the culture that you belong from? I see Punjabi hip hop bringing so much culture into India and that revolution is coming. वो आपके back of the mind कभी play करता है that okay I'm from a certain background, certain culture, I need to do things a certain way? तो यार हम सरदारों में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है. In fact, you guys are doing much better than others. Look at that man. 100%. I'm a great fan of DD. हाँ. Man, Diljit has created history. I would like to go on record and actually say that Punjabi hip hop artists or even other Punjabi artists have made the streetwear and this streetwear culture popular in India. वो पहन के स्टेज पे आते हैं, लोग देखते हैं तो उनको पहनना है. आज एक बात बताता हूँ. नॉट जस्ट स्ट्रीटवेयर कल्चर और हिप हॉप कल्चर, मास्टर कार्ड का, वर्ल्ड बैंक का chairman is a Sardar. Yeah. Most educated person, Dr. Manmohan Singh, the Prime Minister, ex-Prime Minister of India. Diljit Dosanjh. Yeah. अब आप एक चीज़ रियलाइज कर रहे हो, हम टर्बन की आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं. बिल्कुल. I am proud to wear the turban for some reasons and I feel so happy today because I've been bullied on certain things, but यार एक कल्चर नहीं बनाया मैंने. मैंने सिर्फ ये कोशिश किया that can I become a part of it. Where I come from, Dubai, where I come from, I have never been pulled down because I wear a turban or I'm a Sikh or I'm an Indian. Right? They are so diverse. You're staying in a country which is governed, which is ruled by one of the most beautiful families of the world, Maktoum families. They're the rulers of Dubai. Yeah. They have never imposed their religion onto anybody. I have met Indians, Russians, Chinese, Japanese, name the country and I have friends or acquaintances or contacts of that country. We are staying in that same country together. It's one big kingdom. It's one big box. We all stay. Wow. We all eat. We do not pull anybody down. I think that's the beauty of diversity in Dubai. Yeah. And that culture takes me that let's create something for everybody, not just you, not just for a particular generation, particular age, or genre or something like that. Well said, good thoughts. We know a little about you now. थोड़ा सा अगर Trillionaire की बात करें, before we move on to the next segments, where do you see Trillionaire moving and growing to in the next 5 years, let's say, and what is the vision for it? For its whole lifetime, lifetime is a very long term. मैं जोशी नहीं हूँ. इसलिए मैं next 5 years पहले पूछा. Next 5 year बोलूँ तो next 5 months I'll tell you something. We are planning to launch in India.
Okay. because bhai Matrabhumi is important. That's why I said that if you like streetwear, you might be purchasing from them because they are entering the Indian market now. So we are planning to launch in India in a big way. I want to make after Middle East, India my biggest market. It's still my biggest market, but UAE se ship karna is a task at times. So I'm deciding to launch full-fledged in India, and definitely it's going to be my biggest market, bigger than UAE. Yeah. थोड़े कम लोग हैं इंडिया में लोग भी ज़्यादा हैं and for the next 5-6 months I'm working on that. 2026 end we have a very big event coming, another fashion week. Okay. I say 10 folds bigger than what we've ever done. Okay. Still a dream, but I think it's coming to reality. Yeah, touch wood, it will. So yeah, that was the general discussion segment with Mr. Arjun. We'll now move on to a fun and quirky segment, which is the hot seat, where I'll ask you rapid fire like questions, and you have to be quick and quirky with your answers. Ji. Okay, so we'll catch you guys in the next segment now. Welcome back. We are now in the hot seat segment where I have some fun and quirky questions for Mr. Arjun. So let's see how well he does. So my first question is, one design trend you would never follow. One design trend I would never follow: tight clothing. Okay, why? अरे uncomfortable है, थोड़ी शर्ट टाइट लगती है, अच्छा नहीं लगता. No, no. I really don't like it because I think it makes not just you, the other person also uncomfortable at times. Do you believe that fashion, uncomfortable fashion is acceptable or fashion should be comfortable? But then you can't wear uncomfortable fashion everywhere, right? Yeah, like I want a lot some- of times people say like comfort over fashion. Do you believe सर that? कंफर्ट तो नाइट सूट में होना चाहिए, बट अनकंफर्टेबल फैशन का मतलब ये नहीं है कि दूसरा आदमी भी अनकंफर्टेबल हो. तुम हो, चलो ठीक है, तुमने फैशन कर लिया, पर दूसरा अनकंफर्टेबल हो तो कुछ प्रॉब्लम है. True. Yeah, well said. Good answer. If Trillionaire had a theme song, what would it be? वी ऑलरेडी हैव वन. What is it? हनी सिंह. Millionaire. Millionaire. I want to create a trillionaire. मैं भी यही सोच रहा था. नहीं, I want to create something like Trillionaire. Yeah, nice. Hype drops or slow build? Which Hype strategy works better? Hype drops. As a marketing gimmick, hype drops. So when I was researching on you, I saw that your website only has about six. We do SKUs. drops. Okay. We do drops. That's why. We do blind drops. We do friends and family only. Okay. And so, Okay. but now when you see our website, in the coming 6 months, you're gonna see a lot more things coming up. Okay. Nice. One color that every luxury brand is overusing. Orange. Okay. It's going too crazy. Is it because of blue orange? No, not blue orange, because I've seen Hermes, I've seen Louis Vuitton, Gucci. आपका कलर येलो है. if I'm वो not तो भाई mistaken. वो कोई चोरी नहीं करना. हाँ. ठीक है फिर. Brand collaboration dream. Nike x Trillionaire, Louis Vuitton x Trillionaire. Nike X Trillionaire. Why? I am not Louis Vuitton. People don't understand the brand. Louis Vuitton is a trunk maker. They are luxury trunk makers, not a sneaker, streetwear, fashion thing. Louis Vuitton X Trillionaire, I don't think it can ever come. Okay. I can't even imagine that. Nike, sure shot. Next 5 years, I think we may have a Nike. और अगर X मैं Trillionaire. options नहीं देता तो आप क्या बोलते फिर? Next big collaboration. Next collaboration. Trillionaire X. Will Trillionaire x blue I think- orange ever be a possibility? Or are you guys If competitors? okay, I because we're doing the rapid fire, but this is something I actually want to say. Indian streetwear market is growing, is booming, and through this podcast, this is my humble request to all designers around us in India. Let's all meet up someday, sit down, and make sure our market goes higher, bigger than other international markets. Make If it a we all collaborative sit- space. I'm not saying collaborative. Let's sit and decide how together we can create this market bigger. Okay, so basically मैं कह रहा हूँ expand 100 the pie. बंदे एक्सपैंड इट. एक 10-100 रुपए की मार्केट है, एक 100 बंदों की मार्केट है. लेट्स एजुकेट आवर culture, our public, and make it 1,000, and then we all sell to the 100 people rather than selling to the 10 each. Let's create it. I want to make sure the Indian streetwear market grows 100x, and it can. Yeah.
यार जो हम देख रहे हैं यार, पांडा के लॉन्च, ईजी के लॉन्च में लाइनें लग रही हैं 100%. वो हमारे है यहाँ पे. और दूसरी चीज़, अभी मैंने खैर ये जूते पहने हुए हैं, 710 इंडिया का ब्रांड है, कॉमेट स्नीकर इंडिया का ब्रांड है. 710 की इतने क्रेजी जूते हैं दैट दे आर गोइंग पैरेलल टू व्हाट Balenciaga is doing, चंकी. यार why can't, when I go to a crab dog crew or a veg non veg or a super kicks, why can't I see Indian brand sneakers there? I've always had that issue as well. यार And I've नहीं, voiced it as well. ये गलत है. हाँ. ना गलत तो नहीं है बट सही नहीं लग रहा यार. हाँ. देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट Yeah, इट. something's आई missing. थिंक इंडियन स्नीकर्स शुड हैव देयर ओन काउंटर्स, ओन रैक्स एवरीवेयर. Yeah, yeah. दिस इज द लीस्ट वी कैन डू. Because in India, I know it's the hot seat, but in India, a lot of people try to copy or adapt the Western culture, भाई एक but it's बात not the other way मैं around. आपको एक बात बताऊं, व्हाट डू यू मीन बाय कॉपी एंड अडैप्ट? अडैप्ट तो करना चाहिए बट व्हाट डू यू मीन बाय कॉपी? कॉपिंग कलर्स, कलर स्कीम ना यार, उससे ज़्यादा क्या कॉपी करोगे? हर चीज़ पे तो ट्रेडमार्क है. मैं कहता हूँ नाइकी हैज अ ट्रेडमार्क ऑन इवन ऑन द लेसेस नाउ. उनका जो फ्लैट लेसेस है उनके ट्रेडमार्क है. हम वो कॉपी नहीं कर सकते. वी आर, आई कॉल इट इंस्पिरेशन. Okay. We are not replicating, we are inspired. Okay. Even our brand is inspired with a brand, from a brand, right? Okay. So I will call it inspiration, but how does it matter? If you can wear a Nike Air Force One, why can't you wear a 710 का जो कारीगर उनका शूज आता है? Why can't you wear that? True. Yeah. सेम लुकिंग है. उल्टा बढ़िया भाई, इंडिया ना, मेक इन इंडिया थोड़ा सस्ता भी होगा अपेरेंटली. चलो सस्ता महंगा इज अनदर टॉपिक, बट इंडिया है भाई. I love wearing Indian sneakers. That should be tagline. Modi ji, make in India. Yeah, that's right. Okay, moving on. One fashion myth that irritates you the most. कि यार ट्रेंड हमेशा रहेगा. ट्रेंड तो भाई मतलब It's called trend for a reason. ट्रेंड फॉर अ रीजन. Yeah. If you could style any global celebrity for a red carpet, who would it be? दिलजीत दोसांझ, एनी डे. दैट्स क्या माय पहनाओगे ड्रीम. उनको? वो भाई वो तो बस सामने आ जाए फिर मैं देख लूंगा. He's your favorite? I really respect a few artists in my life, and I think Diljit is one of them. I wouldn't say I'm a fan, but he's an inspiration for a lot of us. Yeah. Where he has grown, where he comes from, and where he is today, I think he's changed the whole game. Yeah, yeah. True. He and I think he was the first global star coming out of India, doing shows all over the definitely world. should be. Yeah. But he deserves it. Even Yeah. if he isn't, he deserves a round of applause on that. Yeah. इसकी reel बनेगी. पक्का बनेगी. If your wardrobe represented a city, which city would it represent? Japan. Why? White shirts, blue jeans. Oh. If you would have met me before 2020 maybe, I was only white shirts, blue jeans. That's it. And black shoes. आज भी कुछ नहीं तो 100 तो white shirts हैं और 100 blue jeans, same color, same fit. I think I know a lot of people like that. Mark Zuckerberg, man, same. Tim Cook. Yeah. I think मैं भी उनमें से एक हूँ यार, बस थोड़ा लेट हूँ, आऊँगा. That's sure. Okay. One branding term you secretly dislike but still have to use. Streetwear. I don't like the term. हम सड़कों पे थोड़ी पहनेंगे. Streetwear is it's a look. What do you think it should be renamed to? Street style. Okay. Yeah, that makes more sense. Styled for the streets. Yeah. Worn everywhere. Yeah, well said. Okay, what's one fashion trend you wish would completely disappear? Old money. Old money? Like, okay, describe one person wearing old money clothes. Or, Even I do, but I still don't like that trend. okay. I think not because I don't like the trend, but यार linens कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं यार. I went shopping a few days back. The only thing I could see, linen shirts, linen pants, and all those inspired shoes. Minimalist. Yeah, You are a little but नहीं यार, extravagant. minimalist. You can wear a white shirt, a white t-shirt, and a black track or a blue jeans. Still be minimal, but ये linens कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं. The trend is actually out. You can't differentiate between. I won't take the name of the other brand, the first brand, Loro Piana, and the other brand. Okay.
The problem is one is like $10,000 and one is like not even $100. But I know a lot of girls who are still going for the old money looks. Yeah, I do not dress to impress people. I don't make. I would say, let's create something for yourself rather than for others. Should look good. Yeah. Fit should be good. Quality should be good. I think that's it. And the final question for the segment: Ji. if you had to design an outfit that represents India globally, what would the outfit look like? Maybe a kurta pajama X streetwear something. Something to do with Indian. A streetwear kurta pajama. Maybe something like that. एक डिजाइन कभी मेरे को बना के भेजना मैं है पक्का I try भेजूंगा, to put it on the but ये podcast. बहुत सोचने वाली चीज है. मतलब I don't think any Indian designers will try to do it. Yeah. Maybe something to wear with the sneaker, which looks good. Yeah. आजकल लोग कुर्ता पजामा के साथ भी स्नीकर पहन के ही बाहर निकल पर जाते हैं. वो स्ट्रीटवेयर में नहीं आता ना, वो तो फिर वो कंफर्ट में आ गया. वो भाई सब आजकल वो स्केचर वाले अंकल हमारे. Yeah. So yeah, that was the hot seat segment. Really fun, really quick, really quirky answers. I think I would give you an 8.5. Improvement. Can I get a hamper? Can I get a hamper? Scope hai. But yeah, now we're moving to a little serious segment जहाँ पे थोड़ा फाइनेंस की बात करेंगे, मनी की बात करेंगे, नंबर्स की बात करेंगे, because it's the finance 101 segment. So we'll see you in the next segment now. Welcome back. We are now in the finance 101 segment where I have some money finance related questions because ये भी important है. अगर लोगों को business ही नहीं समझ आएगा तो वो घुसेंगे कैसे? And I always like to assume that 18, 19-year-olds are watching my podcast, so they are here to learn something, and from your experience, it's my responsibility to ask you certain questions that they can learn from. My first question, very basic, simple. When you launched Trillionaire, आपका first major investment कहाँ था? Was it design, production, marketing? So that they can also get an idea कि कहाँ से शुरू करना है. My first major investment was guts. Okay. And a promise to myself that come what may, Yeah. I shouldn't stop. I won't stop. Okay. I think that's the first thing that I took the first step. Yeah. You know, Very true. I believe brands and rags to riches की stories है. आप आज तक ये नहीं देखोगे कि उसने अच्छा डिजाइनर हायर किया या अच्छा आईटी का गाय हायर किया या उसने बहुत पैसे लगाया या मैन्युफैक्चरर अच्छा था. नहीं यार, आप रैग्स टू रिचेस की कोई भी स्टोरी उठा लो, किसी भी सक्सेसफुल आदमी की स्टोरी उठा लो, आप ये रियलाइज करो कि उसने पहला स्टेप लिया और वो रुका नहीं. Courage. And courage. I feel fear clogs and Very true. courage liberates. Very true. Like वो स्टोरी है ना, एक बाल लो पहाड़ पे बांधो, आया तो पहाड़ गया तो बाल. true. वाली story. Yeah. Is business हो, life हो, ups and downs तो रहते ही है. It's more important for you to not give up when you're down and pull yourself back up because obviously ऊपर भी जाएगा. एक चीज है कि अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो आपकी कोई मदद नहीं करेगा. Yeah. अगर आपने स्टार्ट करके आप फेल हो गए, you can revive. There's a line that says that 50% of the work is just by starting. Yes, I believe that. Yeah. You can revive things, but Yeah. you can't create things for somebody else. Yeah. If you started something and you fail, I hope you never fail in life, but let's say you start a business and you fail. If you failed, I can revive you. But what if you didn't even start something? Yeah. I can't create something for you. Yeah. अगर मैं आपके लिए क्रिएट कर रहा था तो मैं पागल हूँ, मैं तो अपने लिए करूँगा, मैं पैसे ना बनाऊँ. हाँ. But just for the viewers, अगर बताना हो तो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट I think कहाँ हुई थी? we took trademarks. I think just to be on the safer So side. Compliances, trade licenses, trademarks, all of these, and then definitely hiring a good fabric sourcing, fabric technician, what we call textile technician, TT. Okay. For the garments, because मुझे focus रखना था कि हमारे fabrics और garments अच्छे बने. Okay. And when a brand like yours, they go for Milan Fashion Week, New York Fashion Week, how much of that is for increasing sales and how much of that is for increasing brand equity and recall? I think sales don't matter at fashion shows. Okay. I think it's for some brands it's a marketing gimmick, while for some it's actually showcasing their talent.
Yeah. You know, all of these, you know, कहते हैं ना कि आप करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं, Hmm. करोड़ों लोगों के ब्रांड होते हैं, Hmm. और कुछ 100-200 ब्रांड ही इन फैशन शोज में शोकेस होते हैं. Hmm. So you know, you're it's like you're doing the last lap, or what do you say, The last mile. the winners run. Hmm. It's the winners walk, Hmm. the last man standing, something like that. For us, it's actually kind of marketing, Hmm. but it's an achievement. Yeah. Yeah. It's nothing to do with marketing, sales, anything like that. It's more to do with brand equity. I feel Yes, like I feel credibility recall. भी I मिलती can है. I can put it in recall, Hmm. but I would say that for sales, no. Yeah. I don't know. Agreed. We've definitely got sales, But in a way जब brand equity बढ़ती है, एक recall बढ़ता है, तो sales भी definitely. obviously, yeah. A lot of times founders struggle to find the right balance between creativity and business. अब उनको maybe sometimes they know कि ये बनाऊंगा तो ये 100% बिकेगा, but their creative morals don't allow them to make something like that. How have you found the balance? इसलिए ना मैं हर 3 महीने में Hmm. अपने डिजाइन टीम को बदल देता हूँ. Oh. एंड IFI. मेरी टीम जो बैठी हुई है यहाँ पॉडकास्ट में हमारे आगे पीछे, वो बहुत गुस्सा है मेरे से इस बात पे कि आपको एक बंदा पसंद नहीं आता है. Okay. अब मेरा इसलिए जवाब होता है कि यार अगर मैं दाल मखनी बनाने वाले से पिज्ज़ा बनवाने की कोशिश करूंगा तो शायद वो फ्लॉप हो जाए, तो दाल मखनी बना के साइड होने थे. हाँ. पिज्ज़ा के लिए कोई इटली से बंदा उठाते हैं. Yeah. So I think it's always good to refresh things. Definitely you have to keep one main designer, graphic designer, or a fashion designer for you for a brand who knows your ethics, the base, the core of your brand, the color scheme. और हमारा तो सब कुछ एक कुकी कट रहा है. आज अगर मैं नहीं भी हूँ, कोई और ब्रांड चला सकता है certain things, because हमारा color scheme सब कुछ decided है, pre-decided, even the fonts, and even the vision, कि भाई हमने कहाँ बेचना है और उस जगह पर क्या बिकता है. ओके. अब आप लोग आई थिंक 3-4 years से बिजनेस में हो, तो around 4 years. यू मस्ट हैव सीन मेनी सीजनैलिटीज एंड ट्रेंड्स. For you as a founder, what are like some top metrics that you like to look at and keep a check कि अगर ये सही रहेगा तो मेरा business सही रहेगा? यार मैं ना कभी ये metrics को follow नहीं करता, but अगर हाँ, if I want to focus on something, what I actually see is I want to see how many people are interacting. Okay. Not just to my brand, for other brands also. Okay. We really need to understand what are your friends of the industry also doing. You look at the market as a whole. Yes. Okay. And when I say market is just our streetwear culture, sneaker market, the industry, what is coming up? I want to see what sneaker is being launched. I want to see why is this particular brand going crazy. आजकल ना एक्टिव वेयर का जमाना चल रहा है, so वो मुझे जानना है क्यों चल रहा है. क्योंकि अभी रिसेंटली हाइप हो गया कि पैडल is a new sport. I love that sport. Everybody is playing paddle. I love it. एक टाइम पे सब क्रिकेट खेल रहे थे, एक टाइम पे सॉकर खेलने लग गए, एक टाइम पे पैडल खेल रहे. अब नेक्स्ट भी कुछ आएगा, बिकॉज पैडल इज सो ट्रेंडिंग दीस डेज, तो एक्टिव वेयर ऊपर हो गया. सो अब फिगर आउट करो, इट्स द स्पोर्ट दैट इज क्रिएटिंग दैट इंडस्ट्री टू गो अप. अब मैं कह रहा हूँ, अब एक दिन ओलंपिक्स कर देंगे, कोई हमारा इंडिया का रनर नंबर 1 आ जाएगा तो उसके जूते फेमस हो जाएंगे. थॉट है. That's streetwear के लिए आपको क्या लगता है, ऐसा क्या हो सकता है? What is a complementary factor for streetwear? Like concerts हो गए, culture जो build हो रहा है वो सब हो गया, उसके अलावा कुछ unique इंडिया में तो दबा के कॉन्सर्ट हो रहे हैं. We had Coldplay, people going crazy. We had Diljit, Karan Aujla. यार इतने Travis Scott, Himesh Reshamya, man. I am crazy. People have gone crazy on thinking, भाई हिमेश रेशमिया के कॉन्सर्ट सोल्ड आउट हो रहे हैं, but that is like he's the OG actually. But I have spoken about this in my other podcasts also, that the experience economy in India is booming a lot because people are willing to spend for experiences like this जो वो पहले नहीं करते थे. आप एक बताओ, Coldplay ना 1/10 लोगों को समझ आता है. You can only 1/10 of the Indian population can connect with Coldplay. Right. उस कॉन्सर्ट में अगर 100 टिकटें बिकी हैं तो 10 सुनने वाले, 90 तो हाइप के फॉलो गए. अब मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको इंडियन कोल्डप्ले ले आया, मैं आपके लिए हिमेश रेशमिया ले आया. Now you're connecting with him.
You can Yeah. connect with his hat, with his cap, Yeah. with that long jacket. Yeah. Everybody wants to go. Yeah. That's Coldplay for us. Yeah. For my generation, it is Coldplay. Yeah. Coming back to the finance part of Ji. things, how do you approach pricing at Trillionaire? I saw that most of your products are priced at 555 AED. वो आई लव नंबर्स है ना स्लॉट मशीन खेलने का शौकीन हूँ तो हाँ. मुझे ट्रिपल्स का बहुत शौक है बट द प्राइसिंग बिकॉज या डेफिनेटली इफ एनीबडी गेट द अपॉर्चुनिटी गो टू दुबई विजिट आवर ऑफलाइन stores Yes, shop and you shop they are available in Dubai Mall, Emirates Mall. Emirates Mall in Abu Dhabi a lot of Yeah. we can put that in the caption for the video Okay. definitely so I want people to go and experience it Yeah. offline Yeah. because we believe in good craftsmanship. Okay. Even if I want to sell a white t-shirt, I will not sell something that is not at par my standards. Okay. You know, I'm trying to maintain the standard. Hmm. So I think we are priced at a little higher. That's why we call ourselves a luxury streetwear, Okay. rather than just a streetwear. But ये 555 का क्या? यार मैं बोला ना slot machine. अच्छा. I love gambling. I'm Because just a lot of joking. times जो वो psychology से play होता है is around यार 9. साइकोलॉजी से प्ले करने के लिए मेरे पास नाम है हाँ. ट्रिलियनर हाँ. मैं उससे खेल लूँ नंबर तो मैं अपनी मर्जी की कर लूँ Okay, fair. When you look at luxury fashion, like you said, luxury streetwear के category में आप लोग fall करते हो. You have been to Dubai, you've seen it there, Milan, Europe, जी maybe even US. You must have Very big knowledge for streetwear. gained knowledge about it. What difference do you see from these places compared to India, and how does that impact your financial decisions? Yeah, there is no there's no difference between the US, the Europe and Middle East. Okay. Definitely Indian market there might be a difference, but in तीनों की बात करें तो यार $150 की टी-शर्ट है Hmm. $150 $150 is nothing, Hmm. right? And similar 120 euros for a t-shirt, luxury street, a good t-shirt. Yeah. It's decent pricing. Yeah. When you compare to India, yes, I would say we are on the higher side, but believe me, there are certain brands which have the same price tag of what we are planning to sell at. And even So, more. yeah, but the market is big. I am not saying I'm there for the affordable market. That Yeah. my niche is those people who want to wear good clothes. Okay, we may come up with a collection for everyone. We definitely I want everybody to wear my Hmm. clothes. Hmm. We'll figure out certain ways to how to tweak it in a different way. Okay. Maybe not just the t-shirt. We can give them a hat at an affordable price and Okay. let them be a part of the Trillionaire family. Yeah, that's a good answer. Like before we started this segment, मैंने बोला था that I assume that 18, 19-year-olds are watching, so I want them to gain that knowledge. So a question for that: if a kid today at maybe 19, maybe 20 has 1 crore in his bank or his father is funding him and wants to start a streetwear brand, Ji. where should they invest first? How should they go about investing this money? What mistakes can they learn that you made from you? And what should they keep in mind going forward? Okay, we'll split this question into multiple parts. Yeah. 1 करोड़ रुपए हैं पहले तो जाओ बैंक में उसकी एफडी करो Okay. First उसका step. हाँ उसका इंटरेस्ट आएगा जो उससे ब्रांड बनाए Okay. टू मेक अ ब्रांड टू क्रिएट अ बिजनेस यू डू नॉट नीड a lot of money. Yeah. A lot of capital is not required. You require a good plan, a good idea, business idea, a good plan. Let's say we're talking about streetwear, something for these kids. Let's create a streetwear brand today. उतने पैसे नहीं चाहिए हमें. चाहिए होंगे तो निकाल लेंगे बट अभी नहीं चाहिए. एक आइडिया सोचो. फिगर आउट करो कि क्या प्रॉब्लम को तुम सॉल्व करना चाहते हो. Okay. प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं होता कि भाई हर चीज में प्रॉब्लम होगी. एक आइडिया कि यार मैं इसको एक इट्स अ पजल. यू हैव टू प्लेस इट समवेयर. If I may interject to complete your sentence, एक ब्रांड में हर चीज की आइडेंटिटी होती है तो कौन सी आइडेंटिटी मिसिंग है? मे बी दैट्स व्हाट दे कैन लुक एट. मे बी लाइक सी बिना मांगे तो भीख नहीं मिलती. ठीक है. आप शॉपिंग करने जाते हो आपको आपकी फेवरेट टी शर्ट कभी नहीं मिली होगी. जब भी शॉपिंग करने गए यू हैव नेवर आइदर गॉट द बेस्ट फिट और द बेस्ट कलर और द बेस्ट फैब्रिक और द बेस्ट डिजाइन यू वांट. दिमाग में ना शॉपिंग करने से पहले एक आइडिया लेके जाओ कि ये पहनना है आज. वो नहीं मिलेगा. तो आप समझ रहे हो कि कुछ तो मिसिंग है. वो जो मिसिंग है ना उसकी लिस्ट बनाओ. यार ऐसी चीजें नहीं है ये चाहिए जो आप कॉमनली जाते हो. यार मुझे बढ़िया व्हाइट टी शर्ट नहीं मिल रही. बढ़िया थिक फैब्रिक चाहिए. ऐसा चाहिए यार मेरे को अपने
शॉर्ट्स के साथ पहनने हैं, जो भी पहनने हैं, मैं Yeah. टेनिस खेलने जा रहा हूँ, मुझे ऐसा चाहिए, पर ऐसा चाहिए, हाँ. लिस्ट बना। Hmm. डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बहुत कॉमन होंगी, Yeah. 10 प्रॉब्लम में से ना 8 में कुछ एक कॉमन होगा, उस पर वर्क कर लो। Okay. एक 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 फोकस रखो। Hmm. डोंट से ओ आई एम लॉन्चिंग अ स्ट्रीटवेयर ब्रांड, Hmm. व्हाट एम आई डूइंग विद इट, आई डोंट नो, आई Hmm. एम गोना मेक टी शर्ट एंड सेल इट। Hmm. ऐसे बहुत ब्रांड्स हैं। अभी हमने एक मजाक मजाक में एक कॉन्सेप्ट चालू किया था डेड स्टॉक के नाम से। Okay. द स्टॉक इज STALK, जहाँ पर ना ये जो करोड़ रुपए तो नहीं, जिन्होंने 10-10 लाख रुपए के ब्रांड चालू करे हैं, Hmm. उनका ब्रेक इवन लेट्स से 3 लाख रुपए पे है, Hmm. ठीक है, 33% पे ब्रेक इवन, उन्होंने 3 लाख रुपए का स्टॉक बेच दिया। Hmm. बट वो नया स्टॉक इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि उनके पास अभी 70% इन्वेंट्री बाकी है। Hmm. Because of that 70% still in stock with them, Hmm. they don't want to risk another lot, and let's Yeah. say now they'll have another 100%, they'll have 170% of the Yeah. stock. Yeah. So what we as that stock does, that we go to such brands, we Okay. approach them, we said, listen, Hmm. you've made your money, right? You've made your profit, you've Hmm. made your capital, Hmm. sell us these t-shirts Hmm. at the cost of manufacturing, or at Okay. a very nominal cost. Okay. Let's say आपकी कॉस्ट है बनाने की, let's say 100, you sell it at 110 to us. Hmm. We'll take it, we'll Hmm. use your brand name, Hmm. we'll go to college fest, Hmm. we'll put our stall, we'll pay for the stalls, Hmm. we'll use your brand name, and Hmm. we'll sell them at, let's say 150 200 Okay. at max, where Hmm. you are selling at 500, हाँ. we'll sell it at 200. हाँ. ए आपके कपड़े, आपका स्टॉक हमने ले लिया, आपको पैसे दे दिए, Hmm. आपका कैपिटल फ्री हुआ, आपका स्टॉक हटा। हाँ. दूसरी चीज, आपको प्लस ही आए हैं, पैसे कम नहीं आए, बिकॉज आपने 30% से अपने स्टॉक के पैसे निकाल लिए थे, बाकी जो ये 70% बचा, 70% बचा, ये आपका प्रॉफिट। Hmm. मैं प्रॉफिट पे भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, मार्जिन दे रहा हूँ। Hmm. हमारा फायदा एज अ कंपनी, एज डेड स्टॉक, इज दैट वी अर्न दैट 20-30% or that 30 Margin. rupees Hmm. margin, Hmm. and we are spending also, right? We are buying the stall, we're gonna have people who are gonna sell it for us, 100%. we're gonna do a little marketing. Yeah. इससे क्या होगा, आपकी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ रही है। Hmm. कॉलेजेस में Hmm. जिनको एक्चुअली में चाहिए Hmm. टी शर्ट्स, जो एक्चुअल पहनते हैं, हम डायरेक्टली आपके उसमें जा रहे हैं। यू कांट गो एज अ ब्रांड टू दीज फेस्ट एंड आई एम सेइंग, आई एम डूइंग 10 brands together on a stall, Hmm. I may sell. Okay. You're doing one solo brand on a stall, you may not sell as much I would, Yeah. because I'm giving them options Yeah. of brands also, of pricing also, of Yeah. colors also, and of sizing also. Yeah. True. So I think this is one problem. Dead stock Hmm. is a very big problem with new brand Yeah. owners, Yeah. whoever they launch. Okay. कि they Yeah. do Good not advice. calculate Yeah. कि यार ये हुआ तो क्या करूँगा। Yeah. True. Yeah. आपने visibility की बात करी, एक ऐसी question आया दिमाग में, what would you value more, like brand visibility, brand awareness, or like customer loyalty? I think brand awareness. You want more people to know about your brand. Yes. Yeah. I am not a heritage brand. Okay. I can't have loyalty. Hmm. I don't expect people are gonna buy Trillionaire clothing to be loyal to my brand. Yeah, Hmm. they may like it. I want them to be loyal to my quality, Hmm. but not to the brand. Hmm. There is definitely going to be a better brand Hmm. than Trillionaire someday Hmm. in the coming future. I know it's going to happen. Okay. If we're going to compete. That's when I become inspiration for people, right? Absolutely. For other brands. Yeah. So I don't think loyalty is a point here. Hmm. I would say brand awareness. Hmm. छोटे टाइम में जितने लोग जानने लग जाएंगे तो उतनी लेंथ पड़ेगी. Yeah. Mhm. And before we end the segment, now that Trillionaire is entering the Indian market, what can the consumers expect? कोई offline stores खुलेंगे, कोई quick drops होंगे, क्या look forward कर सकते हैं? Well, India के लिए we are all geared up. Okay. we are still activating our collaborations in India offline stores का. Okay. We plan to open a few stores of our own. Okay. Not now, next 2-3 years. Hmm. But उससे पहले with the launch we're going to do collaborative stores, shop in shop जिनको हम बोलते हैं. Yeah. Yeah. Exclusive collection for India. Okay. I have always wanted to create something for India. हाँ. बहुत मेरे को बहुत भी एक चीजें t-shirt तो हैं. मिलेगी सर ना? एक क्या आप आओ. Yeah, so that was the Finance 101 segment. I think a lot of knowledge was shared, and thank you for sharing all Thank that you did. We are now moving to my favorite segment, which is the curiosity gap, जहाँ पे मैं अपने curious से दिमाग से कुछ curious से topics लाता हूँ और आपसे curious से सवाल पूछता हूँ, and आपको भी curiously answer करना पड़ता है ताकि audience थोड़ा curious हो जाए. Sure.
ठीक है? So we're now moving to my favorite segment. Stay tuned, guys. Welcome back. We are now in the Curiosity Gap segment where I have brought in some curious topics. The first topic we see that dive in karte hai, which is the DNA of a brand. Like I have been trying to talk about for the whole podcast, ki brand is about identity, brand is about what represents you. Firstly, when someone wears Trillionaire clothing or accessories, what would you want them to feel? What would you want them to feel represented as? Positive. Okay. नाम पढ़ते हैं, ओ भाई आ गया ट्रिलियनर, Hmm. something like that. When you call somebody Tommy, he becomes like Tommy. When you call somebody a trillionaire, he'll become a trillionaire. Yeah. So I think he'll get a new nickname, Mr. Okay. Trillionaire. I think you love the brand Trillionaire. Yeah, definitely. Yeah. If you had to associate 3 words with Trillionaire as a brand, what would those 3 words be? The best, the best, the best. Yeah. Fair. No, okay. So Trillionaire 3, luxury, minimal and bold. Yeah. That makes sense. Mhm. अब जब हम अगर ब्रांड के अगर और इन डेप्थ जाएं, as Trillionaire as a luxury streetwear, what gap are you trying to fill with that brand identity जो इंडिया में मिसिंग है या ग्लोबली मिसिंग है? या तो 5,000 रुपए की टी शर्ट है या तो 50,000 की है. तो वो गैप आई वांट टू फिल. आई वांट टू बी समवेयर बिटवीन बोथ ऑफ दीस, बिकॉज you can't wear a 50,000 t-shirt with a 5,000 sneaker. You can't wear a 5,000 sneaker with a 5,000 t-shirt. So थोड़ा तो एक गैप, एक गैप क्या बहुत बड़ा गैप है यार. 45,000 का गैप है technically. So I'm trying to fill that gap between, let's say, 5,000-7,000 to 50,000, 40,000. Makes sense. I want to be in that segment only. Makes sense. That I have the opportunity and the freedom to go a little lower also and maybe higher also at times. जब हम Western brands देखते हैं like Off-White, there are people like Virgil Abloh behind them. एक connect, एक story वहाँ से आती है. आज के time पे do you feel like brands are built or destroyed just through social media and that plays a major role in brand identity, brand building? No, I think you took the name of Virgil. See, now he's an identity. Yeah. He's a personality. We also have a Virgil of India. Jaywalking. Same thing. Like one chap has his own identity. Does a few caricatures and sketches. Does tattoos on people. So he's trying to leave his identity also. ऐसे कितने हैं? Yeah. Even Blue Orange, Mokam and Siddharth. Yeah. They are creating their own identity, right? I have seen whenever they walk into a room, people are getting pictures with them. क्या फर्क पड़ता है यार? कपड़े तो तुम उनके पहन रहे हो, ब्रांडिंग भी तुम उनकी कर रहे हो और तुम उनसे फोटो खिंचवा रहे हो. Because that's what actually matters. The people behind them actually matters. And I think Western brands, like I mentioned before, if we all of us get together and create this market, try to grow this Indian market, all these brands are far behind us. I think what I am trying to get at is storytelling in the previous times was very different and traditional in media sense also, and now it's very different because आज भी जो हम कर रहे हैं in a way is storytelling for your brand, for you and your personality and your identity towards the brand. How has that changed and how has that impacted brand building in today's time in 2025? Yeah, I don't think storytelling has changed. Okay. I think the medium to share the story has changed. Yeah. पहले ऑफलाइन होता था, फैशन शो से होते थे, पॉपअप से होते थे. अब वही चीज सोशल मीडिया, लाइव जाके या डिजिटल लॉन्च करके ही हो रहे हैं. I don't think that the story has changed. Okay. Just the way to present from print to we have gone to digital. That's the only. और अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रिलियनेयर की स्टोरी अगर आप एक सेंटेंस में बताना चाहो तो क्या है ट्रिलियनेयर की स्टोरी? ट्रिलियनेयर की स्टोरी इज abundance. Okay. It represents abundance in every aspect of life. I feel Trillionaire की कोई story नहीं है because Trillionaire itself is a story. Okay. The word Trillionaire is a story. It's a mystery, not a story. कोई Trillionaire है नहीं पर सब Trillionaire है. There is something which everybody wants to achieve.
but they can't, because to become a trillionaire, Hmm. let's say in wealth, Yeah. you'll have to surpass multiple billionaires, Hmm. then try to become a trillionaire. Yeah. So I think trillionaire is something that is, you can be a trillionaire, but you can never be a trillionaire. So I think Yeah. Yeah. it's a I mystery. understand what you're It's a saying. mystery. If I were to give it a sentence, I would maybe say that a trillionaire represents someone who's made it in life. Yes, already there. Like, a lot of times people say that life without anything to look forward to has no meaning. If someone is a My friend, trillionaire, okay, I'll tell you. I'll put a line on this. hmm, A dream hmm, is just a vision, true, and a dream with good thoughts and intention is a goal. okay, You know, yeah, मतलब मैं दो तरीके के लोग होते हैं, hmm, एक जो सपने देखते हैं hmm, और एक जो सपने में जीते हैं. hmm, आई लिव माई ड्रीम. okay, आज यहाँ बैठना, hmm, ट्रिलियनेयर के बारे में बात करना भी एक सपना है. hmm, मैं थॉट पे तो हमारे कंट्रोल नहीं होता, बट आई एम आई एम फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड. hmm, I may go off topic, but let me just put it out. I'm full of gratitude that I never thought hmm, that from where I come from and where I'm sitting today, that this was possible. Not just because I'm sitting here and doing a podcast with you or anything else, but I don't know. I think, and I swear I didn't work that hard. I think I was out there trying to figure out to reach somewhere. the right I'm place on my at the right journey. time. Yeah, everything falls. Yeah, Once I think you've taken the first step, hmm, everything falls in place. I think यार तुम्हें अपना डेस्टिनेशन पता होना चाहिए. रास्ता कोई भी ले लेना, थोड़ा ट्रैफिक होगा, कभी गड्ढे आएंगे, कभी हाईवे मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी टोल भी देना पड़ता है, hmm, और कभी टायर भी पंचर होगा. सो यू मे हैव पॉजेस, ब्रेक, स्टॉप्स, detours, but you will reach your destination. Little late, maybe, Yeah. or maybe early. great point to segue into the next topic now, because this will, I'm sure, leave the audience a little curious to think more about. The next topic that I wanted to talk about is something that I mentioned earlier also. Your creativity originated from interior designing. आज ट्रिलियनेयर में जो डिज़ाइंस होते हैं, जो क्रिएटिविटी जाती है, उसका आपके इंटीरियर डिज़ाइनिंग से क्या लर्निंग्स आती है, एंड जब आपको कोई क्रिएटिव ब्लॉक्स फील होते हैं, जब आपको ऐसा फील होता है दैट आई एम नॉट बीइंग एबल टू रिप्रेजेंट व्हाट आई एक्चुअली वांट टू, व्हाट आई एम एनविजनिंग इज नॉट कमिंग ऑन टू द प्रोडक्ट, व्हाट डू यू डू इन दैट केसेस? बहुत होता है. ऐसा नहीं है कि कोई सर्टेन डिजाइन हमें फर्स्ट ग्लिम्स में या फर्स्ट ड्राफ्ट में पसंद आ जाए. मैंने बहुत ऐसे डिजाइन हमारे पास अभी भी हैं, क्या पूरी टीम बैठी हुई है, जितने लोग इस कमरे में बैठे हैं ना, अगर ये गायब हो जाए तो मैं नहीं हूँ कुछ. और जो भी डिज़ाइन होते हैं, कभी ऐसा भी हमने पूरी डिज़ाइन बना लिया है, उसकी शायद सैम्पलिंग भी करवा ली, फाइनल सैम्पलिंग, कलर स्कीम सब लगा के, उसको रिजेक्ट भी करा, बिकॉज वो शायद कहते हैं ना वाइब नहीं है उस पर्टिकुलर. मतलब यार स्क्रीन पे अच्छा लग रहा था, टी शर्ट अच्छी लग रही है, पर जब उस डिजाइन और टी शर्ट को मिक्स करा तो अच्छा नहीं लगा. Okay. Maybe it's not for that particular fit or that particular style. We've used those graphics or those designs later somewhere, tweak करा. कोई डिजाइन कोई गलत नहीं हो सकता. Yeah. ठीक है, you can't end up with the wrong design. Yeah. You may end up with a mismatched design. तो उसको ठीक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट जब भी कोई ऐसा फील आता है यार क्रिएटिविटी, मैं बोला ना 3 महीने में डिजाइनर चेंज करो. I think design is all based on perception. Any design can be liked by someone or disliked by someone. It depends on what you are trying to put out there. Truly said that there is no wrong design. Yeah. कोई गलत डिजाइन नहीं होता, किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा. बट उसमें भी कभी कभी चीजें होती है कि मार्केट में क्या चल रहा है. Let's say there was this whole full year of pop colors going on. Yeah. I was very shocked. यार I can't wear a neon. And then by the end of the year even I was wearing neon because the whole market was like like we said, old money, linens. वो linens ही चल रहा है आजकल, linen blazer चल रहे तो चल रहे हैं. Dull colors, when you go to Italy, all of these
पेस्टल्स एंड ऑल वाइट्स एंड पेस्टल्स यूज करते हैं जनरली. Hmm. सो वो उस कंट्री का कल्चर है. अब मैं एक पॉप कलर आई कांट एक्सपेक्ट इट टू सेल एट Yeah. until unless it's like something crazy going out there. Yeah. Mhm. True. आपके इंटीरियर डिजाइनिंग के टाइम से कुछ ऐसा है जो आज भी आपके डिजाइन्स को इन्फ्लुएंस करता है? बहुत कुछ है. Like I what? think when I went to my masters, my primary course was interiors. हाँ. But उसके अलावा मैंने डिजाइन इन्विजनिंग करी है, हाँ. मैंने प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी करी है. बहुत ऐसे 8-10 मॉड्यूल्स हमने सिलेक्ट करे जिन्होंने बहुत इम्पैक्ट बनाया. मैं आज भी जब भी कोई प्रेजेंटेशन बनाता हूँ ना, मैं अपनी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी के हिसाब से बनाता हूँ. बिकॉज उन्होंने ये सोचा कि प्रोडक्ट तो सुंदर बना लो, प्रैक्टिकल है कि नहीं है ये तो मत बोलो. यू डिजाइन, लेट्स से गोइंग ऑफ ट्रैक फ्रॉम फैशन, लेट्स से यू डिजाइनिंग अ चेयर. या तुमने सुंदर कुर्सी तो बना ली पर वो कंफर्टेबल नहीं है तो बेचेगी क्यों? Yeah. अब शो पीस थोड़ी है, कुर्सी बना रहे हो. चेयर इज सपोज्ड टू वेयर पीपल सिट, Yeah. समथिंग लाइक दैट. Yeah. सो लेट्स नॉट फॉरगेट द प्रैक्टिकलिटी एंड मेक श्योर यू नो द बेस. जब भी आप कोई भी कुछ भी बनाते हो, एक हम नया सिलबट बनाते हैं फॉर लेट्स से फैशन वीक कैंप, एक अलग टीम बैठती है पूरी, हम क्रिएट करते हैं. हाँ. यार हम अपने बेसिस नहीं भूलते. बटन्स कैसे आने चाहिए, कवर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बेसिक तो वही है ना. ब्लेजर इज अ ब्लेजर. अब उसको तुम 2 बटन 3 बटन 6 बटन बना लो तो वो अलग चीज है, बट एक्चुअली इट्स अ 2 बटन ब्लेजर दैट स्टार्टेड, राइट. उसको फिर वो कईयों को लगा नहीं यार 3 बनाना चाहिए, कईयों को लगा नहीं डबल ब्रेस्ट बना लो, कईयों को लगा इसको वेस्ट बना लो, वेस्ट कोट बना लो, अपने शोल्डर बना लो, इसको छोटा बना लो, बड़ा बना लो. बट यही छोटी छोटी जो डिटेल्स होती है जिसका ध्यान रखते हो आप, वही डिफरेंशिएट डिस्टिंक्ट करती हैं आपके सही ब्रांड बात को. है. बट ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर क्रिएटिंग एट द एंड. इफ यू आर क्रिएटिंग समथिंग टू डू विद द स्ट्रीट स्टाइल, आई थिंक आई वुड गो फॉर ड्रॉप शोल्डर्स. अब वो ड्रॉप शोल्डर में भी बड़े साइजेस आते हैं. ओके. यू नो, वाइड बेस, वाइड स्लीव, नैरो स्लीव, फिट पे भी डिपेंड करता है. ओके. आपने एक्चुअली चेयर का मेंशन किया तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल आया. अगर आपको कोई पीस ऑफ फर्नीचर बनाना हो that represents streetwear and Trillionaire, what piece of furniture would it be and how would it look? एक पीस ऑफ फर्नीचर बना जो which represents streetwear and furniture and Trillionaire. तो यार येलो कलर ही बनेगा कुछ. ठीक है, येलो कलर का क्या? maybe a crazy wardrobe, something to do with streetwear. जो problems है, टी-शर्ट्स, यू नो, कई लोग टी शर्ट फोल्ड करके रखते हैं, कई लोग टी शर्ट टंगा के रखते हैं, कुछ क्रेजी ऐसा. I think I would create a yellow wardrobe. I really want to have like a the answer to this question actually represents what you've been saying, like abundance. A wardrobe gives you space for so many more things to keep in. That these small things come out जब आप सोचते भी नहीं हो ना subconsciously, फिर आपको लगता है हाँ मैं सोचता ही ऐसे हूँ इसलिए मैं करता ही ऐसे हूँ. एंड द रीजन व्हाई आई ब्रॉट दिस टॉपिक आल्सो ऑन द पॉडकास्ट वाज बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो दैट लाइफ में हमेशा जो आप स्टार्ट करो या जिस डायरेक्शन में जाने की सोचो, आप वहाँ पे एंड अप करो इज नॉट 100% श्योर और नॉट, बट यू हैव टू कीप taking learnings from that and applying it to what you do in the future. Sure. Like you did with interior designing and now fashion. So yeah, we can move to the next topic now. Sorry, मैं थोड़ा लंबा बोल दिया. But yeah, the last topic is obviously something very important that we have been touching upon and need to go deeper into, which is taking an Indian brand global. Like, I want to see people in the US wearing an Indian streetwear brand, hopefully Trillionaire after this podcast. But what is missing? Why isn't an Indian brand being able to go global where trends are followed based on that brand, where people are going crazy over that brand? ऐसा हम क्यों नहीं कर पा रहे जो बाहर की कंट्रीज हमारे यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर पाती है? Rap culture? Crap culture. They pull you down. Okay. There is nothing against anybody, but I've been in the Indian market for the past 6 months, trying to figure out manufacturers, trying to figure out retailers. I've sat down with people of the industry. I wouldn't call them friends of the industry because they haven't been a part of my journey yet, but I would call them friends of the industry. Okay. Some reasons, but I don't think they only want to sell their own
own clothes. Okay. And इस चक्कर में ना growth नहीं मिलती. But I brands know. like Drew, जैसे Justin Bieber का है Drew, why is that now popular? यार Was वो in ना the, वो in hype India. है, hype. हाँ, वो hype I- हमें क्यों नहीं मिलती? Because हम try नहीं कर पाए. Okay. हम अभी भी एक तो पहली बात तो मैं 1.6 billion people, right? I say 10% wear it. 16 crore people wear it. It's a big market. Yeah. That इतना बड़ा market तो US पूरा नहीं है. Exactly. ठीक है. तो हमें शायद वो हाइप चाहिए नहीं बाहर जाने की. Okay. दूसरी चीज हम क्यों नहीं बन रहे इतने बड़े यार. I think we don't have somebody who's leading us. You know, Okay. brands like There's no pioneer. I think there's no pioneer who's done it. Hmm. Maybe people are scared. Hmm. That's why I'm sayid let's Risk-taking go. ability कम है. Risk-taking ability particularly for this industry शायद कम है. आप में बहुत लगती है तो what about you taking मैं a आज भी chance? बात बोलूंगा. मेरे से बड़े ब्रांड हैं इंडिया में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा. Trillionaire से पुराने ब्रांड है who are still doing amazing. And if I get an opportunity where they tell me to lead the thing, I'll still tell them, you know what, don't pick me, pick this particular brand or particular person. Okay. And you know, he should lead India to a stage. Okay. Because if God gives me the opportunity, I may do it. But still, I think somebody needs to help somebody to reach somewhere, right? I have the ladder. I'm telling you to climb up to it. Yeah. I want to be on the top. Well, let's do one thing. Let's build the ladders. Learn how to build ladders, and then let's go on the top together. Wow, that's a great thought. I think the market grows, I grow. If the market doesn't grow, there's no point of me being there. I love your way of thinking. It's very collaborative. It's very supportive. It's not competing and everything. But yeah, lastly, before we end the podcast, you have gotten a Trillionaire to India. You've taken it to Milan, New York. What's one city where you would really want Trillionaire to be and be prominent? I want one city I really want Trillionaire to be is Seoul. The headquarters, the hub, the epicenter of streetwear and sneaker, where almost maybe 90% of whatever you see around is inspired from those. South Korea? South Korea. I Oh, think wow. Seoul has That's the a very most unique answer. I Yes. wasn't I expecting think, that. because that's one fashion week Okay. I have been following, and I think that's a place. And maybe the second would be Japan. Okay. To be there. I really want to be on that, you know, South Asian Yeah. belt. I haven't experienced that. Yeah. Thailand, Singapore, Malaysia, Yeah. Japan, part of China. I'm scared to go to China for a reason, because market is quite big, and I don't Yeah. have that. My appetite is not that big. But touch wood, hopefully Trillionaire does really well. Thank you so much for coming Thank on you, the thank you, podcast. Adhiraj. Thank you for sharing all that you did. Yeah, so go shop from Trillionaire when it's available in India, and do follow us on Instagram, on YouTube, wherever we are. And that's me, Adhiraj Sethi, as usual, signing out. Don't forget to like, share, and subscribe. You guys know the drill. We'll see you in the next one.